चलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रबा बिन मोहम्मद है। आई एम स्टूडेंट ऑफ BS Entrepreneurship. So I will be taking an interview of a lawyer whose name is Mubariz Siddiqui. तो before starting it, it would be better अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना. Ji, Assalamualaikum, Rabah. Basically, I'm a lawyer who's been practicing since 2008, primarily in the startup and venture capital finance ecosystem in Pakistan. और मैं ज़्यादातर स्टार्टअप्स को ही एडवाइस कर रहा होता हूँ ऑन देयर लीगल एंड फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स. ओके ओके. तो आपने मतलब अगर आप बताएं आपने थोड़ा सा लॉ कहाँ से पढ़ा और कितने टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए. So I went to the University of London. मतलब कराची में ही इसका प्रोग्राम था. मैंने उसकी एक्सटर्नल प्रोग्राम किया था. In 2008 I graduated. Since 2008 I've been working, so it's like more than it's like around 14 years now. And I started my practice at Rizvi Afridi and Angel, this law firm. उसका नाम रिया बार्कर जिलेट है. Then I moved to Dignam. After that I've been practicing on my own with a few stints in the middle here and there. सही से. तो आप अभी आजकल कहीं पे मतलब एडवाइस कर रहे हैं कहीं पे कुछ इस तरह का आपकी जो प्रोफाइल हो. अभी मेरी अपनी अपनी प्रैक्टिस है कार्बन लॉ के नाम से. इट्स अ फर्म वेयर वी टिपिकली फोकस ऑन स्टार्टअप्स एंड वीसीज. ओके ओके परफेक्ट. तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि व्हाट लीगैलिटीज डू द स्टार्टअप ओनर्स हैव टू फेस व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस. फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन वगैरह और सब चीज़ें उनको नाम जो सोचना होता है और जब वो रजिस्टर कराने जाते हैं तो उनको किस तरह के इश्यूज फेस होते हैं जो लीगल साइड पे होते हैं. कॉफ इन द मिडल. हेलो आवाज़ आ रही है मेरी. हेलो. या आई कैन हियर जी जी. तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग तो हमें क्या लीगल इश्यूज फेस होते हैं जो स्टार्टअप ओनर्स को फेस करने होते हैं. फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई फीस वगैरह हो इस तरह की ऑप्शन चीज़ें होती हैं सब चीज़ें. तो आप बता सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा. यू. या ऑफ कोर्स. सो बेसिकली देखिए एक किसी भी स्टार्टअप को एक बिजनेस बनाने से पहले तो उनको एक बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर करना होता है, विच इज अगर आप एक फंड रेजिंग स्टार्टअप है जिसको आगे फाइनेंसिंग रेज करनी पड़ेगी एक्सेट्रा, यू शुड हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अगर आप फॉरेन फंडिंग रेज कर रहे हैं तो देन यू शुड हैव अ होल्डिंग कंपनी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. अगर आप क्या नाम है so these are the two primary vehicles which most startups use to incorporate the form of business entity. This is the first set of issues. Uske baad, depending on what space you're going to operate in, are you going to be a fintech? If you're going to be a fintech, then you um, don't stick to just the क्या नाम है just this. You need to get a license from either the SECP or the State Bank of Pakistan. अगर आप किसी और रेगुलेटेड एरिया में तो आपको वहाँ पे लाइसेंस लेना होता है. उसके अलावा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ इश्यूज जो हर स्टार्टअप के लिए होगा या हर किसी भी कंपनी के लिए और बिजनेस के लिए होगा वो है registration of IP, and then you have normal legal contracts, employment, etc., and then of course tax registration as well. So these are the broad set of legal issues that every startup would have. ओके ओके ओके. तो आई हैव हर्ड आल्सो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड. तो is it better to start with the public limited or private limited, or is it possible for us to start with public limited? Because I think it requires a huge capital to start a public limited instead of private limited. So can you tell me a little bit about it? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप सिर्फ तभी बनाते हैं जब आपको स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करने होते हैं. स्टॉक आप लाइक यू नो इफ यू वांट टू लिस्ट योर एंटिटी on a stock exchange and be a listed company to be able to raise money from the public, that's when you remake a public limited company. Most startups and most businesses are privately owned, so they don't need to be public companies. They're kept as private limited companies.
Okay, okay, okay. So if I'm starting a business, so I've heard I can start as a sole trader, partnership, private limited, and public limited. So is it better to start as a sole proprietor or private limited? So अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बता दें, गाइड कर दें थोड़ा सा। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप आप तब बनाते हैं जब आपको एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। इफ यू डू नॉट वांट टू क्रिएट एन एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, तो जाके आप जो है ना एक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बनाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक कंपनी जो है, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इन द आइज ऑफ द लॉ इट्स अ सेपरेट पर्सन। तो वो सेपरेट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चीजें ओन कर सकता है, चीजें सेल कर सकता है, उसकी ओनर इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड एज वेल। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, मैं मुबारिज अगर अपने नाम से एक और बिजनेस शुरू कर देता है, लाइक मुबारिज शूज, दैट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट्स इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी, इट इज मी ऑपरेटिंग अंडर डिफरेंट ट्रेड नेम। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अ कंपनी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पे ओ मैंने एक तो लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, मैं आपको वो यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा, यू कैन रीड दैट फॉर मोर और यू कैन लिसन टू दैट फॉर मोर डिटेल। okay, okay, perfect, perfect. So if I've launched a company, I have a name, I have a logo, and I have a different phrase I can say, और उसको कोई कॉपी कर लेता है, तो मतलब what legal actions can I take against them? देखिए, अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बनाई है जिसको कोई कॉपी कर रहा है, सॉरी वन सेकेंड आई एम Sure, sure. जस्ट लुकिंग फॉर सर्टेन थिंग। सॉरी, या, सो इफ से यू मेक अ कंपनी और आपका कोई एक लोगो है जिसको कोई कॉपी कर लेता है, तो देखिए आपके पास राइट है इन्फोर्स करने का कि जी ये लोगो कोई आपका यूज नहीं कर सकता। कोई करता है तो आप कोर्ट लेके जा सकते हैं, कोई करता है तो आप उसको जाके स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, उससे बहुत डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो या आई दिस इज नथिंग, आई मीन यू कैन गो टू कोर्ट एंड इन्फोर्स इट, बट देखें ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। So a lot of people do get away with by starting things, in the sense copying other people's logos and business names, etc., and going ahead with it. ओके, ओके। तो उसके बाद मेरा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन एक तरह से, आपने आज तक कोई ऐसा केस लड़ा हो जिसमें ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का आपका कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो उसमें, या आपने देखा हो ऐसा कोई नहीं, एक्सपीरियंस किया हो? हाँ देखें तो बहुत सारे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जितने भी पाकिस्तान में इतना काउंटरफेट होता है, आपकी डिंग डोंग बबल से लेके जो केक्स होते हैं वगैरह, इस तरह की जो टॉफीज होती हैं, चिली मिली वगैरह, अगर आप जाएं रूरल एरियाज वगैरह में, आपको कभी भी ओरिजिनल नहीं मिलेंगे, आपको फेक बनी हुई मिलेंगी। एंड दैट्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फेक दोस थिंग्स, मेक काउंटरफेट ऑफ दोस थिंग्स एंड सेल देम। तो ये पाकिस्तान में बहुत रैम्पेंट है। मसला सारा ये होता है कि कोर्ट उसको अगर इन्फोर्स भी कर दे, तो वो जो इलीगल एक्टर्स हैं वो जाके किसी और नाम से वही चीज कहीं और बैठ के वही चीज करना शुरू कर देंगे। तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान में मैंने इस तरह का बहुत देखा है। स्टार्टअप्स में फॉर्चुनेटली पीपल हैव बीन एबल टू मैनेज एंड नेविगेट थ्रू इट, एंड नन ऑफ दिस हैज रिजल्टेड इन सीरियस डिस्ट्रप्शंस। सो या। ओके, ओके, ओके। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, एक इससे रिलेटेड है थोड़ा। अगर हम लोग जैसे रजिस्टर करने जाते हैं बिजनेस को अपने, तो इज इट एन इजियर प्रोसेस टू रजिस्टर ऑनलाइन, और वी हैव टू गो थ्रू सो मच पेपर वर्क इन केस वी हैव टू हायर टैक्स कंसल्टेंट और समवन हु हैज एक्सपीरियंस इन रजिस्टरिंग द बिजनेसेस? आप थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे अगर हमें रजिस्टर करने हो बिजनेसेस को? देखिए, एसईसीपी की वेबसाइट पे बड़ा सिंपल है, आप ऑनलाइन जाएं और आप पूरी कंपनी ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो चीपर टू इनकॉर्पोरेट ऑनलाइन, और अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे वो भी ऑनलाइन जाके ही करेगा आपकी भी। बट आर यू आस्किंग वेदर यू शुड हायर समवन और नॉट? रियली डिपेंड्स। देखें आपके पास कितना टाइम है, अवेलेबिलिटी है, कितनी बैंडविड्थ है, कितना आपको इस चीज़ की समझ है। वैसे मेरे एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस जनरली यही होती है कि आप उन चीज़ों पे पैसे टाइम लगाएं जो चीज़ पे
आपकी टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप वैसे रिप्लेस कर सकते हैं आप उसको रिप्लेस कर लें। दिस इज़ माई जनरल एडवाइस टू पीपल। So yeah, if it doesn't cost too much and you're not saving too much, then your time is more valuable. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुबरस भाई। यार, रहीम नेट चला गया। हेलो। हाँ हेलो। जी जी। जी। आवाज़ आ रही मेरी? चले, थैंक यू सो अब आ मच रही है। मुबरस भाई। थैंक यू फॉर योर थैंक यू। टाइम। अच्छा, मैंने आपको एक अपना यूट्यूब का लिंक भी भेज दिया है उस पे, व्हाट्सएप पे, आप उसको भी देख लेना, उसमें जी मैंने जी सारी बिल्कुल। बातें समझाई हुई। परफेक्ट परफेक्ट, आई विल वॉच इट लेटर। ठीक है। ओके। थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर योर टेक केयर। टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह टेक हाफिज। केयर। हाफिज।